समित एक सेकंड यार पियरला हटव ना इथून अरे the Satish Kaushik Entertainment, JW Marriott, PVR Cinema, Jet Airways, Raindrop Media, Raindrop Digital, and Radio Mirchi. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome on stage President of Mijwan Welfare Society, Shabana Azmi. Adab, namaskar. Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to Kuber Presents The Walk of Mijwan by Manish Malhotra, 2018. 9 years. 9 years since we first started this association with Manish Malhotra, but it only seems like yesterday. It has been a roller coaster ride. There have been trials and tribulations. There have been achievements and successes. But underlying it all is a story of empowerment, of dignity, of selfhood, of people being pulled out from oblivion to center stage, of a village, Mijwan in Azamgarh, where my father, Kaifi Azmi, was born. A village that was frozen in time till he decided to step in. And the rest is history. Thank you so very much for supporting us and for coming here year after year. Ladies and gentlemen, it is customary to give a vote of thanks at the end of the show, but I'm breaking with convention because I wish to acknowledge upfront that it is the unstinted support from our sponsors that makes this evening possible.
So thank you to our title sponsor, Mr. Vikas Malu of Kuber Group, which was founded by late Shri Mulchand Malu in 1985 and is now a rapidly growing, multi-diversified conglomerate. And the family is here. Welcome all of you. Thank you to Amar and Payal Tulsiani of 9. Thank you to our jewelry sponsor, Moti Jewels Palace. A big thank you to Hotel JW Marriott for being our hospitality partner, and a special salam to Victor Chen, wherever you are, for conceding to all our requests, not requests, actually demands, with such grace and good humor. Thank you so much. Thank you also to friend, colleague, and long-time supporter, the Satish Kaushik Entertainment Company, Shukriya Satish ji, and every single sponsor who has come on board. I wish to acknowledge Dr. Nilima Sabarwal from Home of Hope, USA, who is present here today. Yay! And has been a partner of many years. Also, a shout out to Gunjan Chaudhary of Swaka. Gunjan, where are you? Just raise your hand. Yes, that's Gunjan. Thank you very much. And Vivek Gupta. Vivek, where are you? Wherever you are. विवेक गुप्ता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उंगली दो तो पौंचा पकड़ लेते हैं. ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता when it comes to Mijwan Welfare Society. A big hug to the hard-working team of Mijwan. You guys are the best. बहुत प्यार. And of course, our partner Manish Malhotra and his super team. Last but not the least, thank you to Neeta and Naresh Goel of Jet Airways for your continued support, always. I would now like to invite on stage the force behind Mijwan Welfare Society, the youth president and secretary, a young lady who is the most dynamic young woman that I know, and I'm very proud that she is my daughter, along with being the daughter of Naresh and Neeta, because they've been so generous in sharing her with me. Ladies and gentlemen, put your hands together for Namrata Goel. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. I know this is my 9th speech, and so I'm going to try and keep it a little different this time, not say the same things. Mijwan, as Shabana Masi said, has been a roller coaster ride. I've had several learnings, and I'm still in the process of learning quite a bit. On the one hand, it has been an exhilarating experience. When I look at the girls of the Kaifi Azmi school and into college, when I see that they are demanding space and negotiating a space for themselves, when they are demanding rights for themselves, I feel very proud. I feel that we've really come a long way. But then I think about all those students who have come from the middle school, from government schools, and joined us, who can barely write their names and have to sit for their state board exams the very next year. That is the irony that we're talking about. You know, I truly believe that this is a game of mindsets, that we must change our own mindset before we change someone else's. I'll give you a small example. We were trying to build toilets in Mijwan. So one of the women came up to me and said, कि हमें तो खेत में ही जाना है. So I looked at her very strangely, and I said, क्या वहाँ तो सांप है और बहुत खतरनाक है, आप वहाँ क्यों जाओगे? तो she said, क्योंकि हमको आदत है, पर उससे भी ज़्यादा हम किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते कि वो बाथरूम साफ करे. So when I sat down and reflected on what they were actually saying, I realized that it came to 120 rupees per annum per household. And of course, dal being 200 rupees per kilogram was of far more priority than health and sanitation. To us, privileged people sitting here, our necessities have a much larger spectrum, but unfortunately theirs don't. And therefore their choice is far more limited. I realized for the first time that we can build as many buildings as we like, but actual change lies in changing someone's mindset.
I'll quickly give you another example. We were conducting a workshop for happy and safe periods. Payal is present here. You know, for the first time, the women were asked to stretch their legs to do a yoga asana. When I did it, I said, yeah, we do this every day. What's such a big deal? But when I thought about it, I actually realized that how liberating an experience it was for them to be able to take charge of their own bodies, to be able to understand what was happening to them. So that is a huge transformation. And I'm going to be very honest with you. You know, I always thought with my urban mindset that the shackles of patriarchy bound them, but actually the shackles of what I considered normalcy bound me. And this is how some changes and transformations have happened in my mind. And of course, there's a long way ahead. Today, I appeal to all of you that we must come together, the state, the media, the NGO, the public, the private sector, because together we can create job opportunities in the villages itself, create employment for them, create an empowered, educated workforce that will be able to determine a future for their lives. Our time starts now. I want to end by some of the words that my grandfather once said. धड़क रहा है फज़ा का सीना, धड़क रहा है फज़ा का सीना, कि ज़िंदगी का मुआमला है, कि ज़िंदगी का मुआमला है, खिज़ा रहे या बाहर आए, खिज़ा रहे या बाहर आए, तुम्हारे हाथों में फैसला है. Truly, ladies and gentlemen, the decision is in your hands, and you can be that change. Thank you very much. I would now like to call upon our Mijwa team, Sanjokta Didi from Mijwa, who's our embroidery and sewing center teacher, Shagufta, Lalima, Renu, and Ashutosh, the secretary of Mijwa Welfare Society. I want a much, much bigger applause. This is a very huge moment for these girls. Thank you very much. सबसे पहले मैं रेनू से कहूँगी कि रेनू आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम रेनू है, मैं मिजवा की रहने वाली हूँ. मैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी में चिकनकारी का काम करती हूँ. जब मैं 9th क्लास में थी तब से चिकनकारी का काम कर रही हूँ और उसी के माध्यम से मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज आत्मनिर्भर हूँ. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज आप लोगों के सामने मुंबई में खड़ी हूँ. मैं पहली बार मुंबई आई, वो भी एरोप्लेन से. मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया. मैं समझती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ मौका चाहिए. थैंक यू मिजवा कि आपने मुझे वो मौका दिया. खुश रहो, जीते रहो. क्या बात है. लालिमा. गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम लालिमा चौहान है. मैं 20 साल की हूँ. मेरा घर हथनौरा कला है. मिजवा से मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है. मैं मिजवा में आई और इंटर तक की पढ़ाई की. जब मैं इंटर तक की पढ़ाई की तभी मेरे घर वालों ने पैसे के प्रॉब्लम से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी. उन्होंने कहा कि आप अब हम आगे इससे आगे नहीं पढ़ा सकते हैं. तो मैंने मिजवा में चिकनकारी सीखा. सीखने के बाद आज मैं सिखा रही हूँ. उससे जो भी मुझे पैसा मिलता है मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ. मुझे जो मौका मिला है वो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं सब लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनूंगी, ताकि हर गांव की लड़कियां बाहर निकले और अपने हर ज़रूरतों को पूरा करें. थैंक यू मिजवा, जो आपने मुझे ये मौका दिया. थैंक यू. And now to Shagufta. Good evening, ladies and gentlemen. I am Shagufta, a daughter of Mijwa. I have done post-graduation and also done beautician course, embroidery course, and a computer diploma from Mijwan Welfare Society. Now I am working as a librarian in Kaifi Azmi Girls Inter College. Kaifi साहब said, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी,
सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी. He did not say these lines only for the people who live on the sidewalks, but for those who break the boundaries and fight for their, and struggle and fight for their rights, and demand for their rights, so that a window can open in this wall. Thank you so much for all of you for being with us. A big hand, guys, big Thank hand. Thank you so much. And now to Sanjogita. She has been our chief trainer. She's seen this journey through all these years. Good evening, ladies and gentlemen. मैं संयोगिता, जब से हमारे गांव में मिजवा में चिकनकारी का काम शुरू हुआ है, उस समय से और इसके पहले तो शादियां हो जाती थी लड़कियों की 16 साल से पहले, 16 ज़्यादा 18 साल तक. लेकिन जब से ये चिकनकारी का काम शुरू हुआ है, लड़कियों ने अपने पैर पर खड़ी हुई हैं और काम करती हैं, पैसे कमाने लगी हैं. तब से 21 साल के बाद ही शादी करती हैं और घर वाले भी उनकी इच्छा को पूरी करते हैं. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं शबाना दीदी का करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. आशुतोष एक वाहिद लड़के हैं, लेकिन हम उनको बोलने नहीं देंगे क्योंकि ये वक्त है लड़कियों के बोलने का. थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द शो.
अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ। सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा मैं। वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हमसफ़र हूँ, तेरे साथ ही चलूंगा मैं। तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूंगा मैं। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा। तू मुझसे चांद मांग ले, मैं चांद लेके आऊंगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये ज़मीन, कुछ इसका आप सिंगार कर। अजीब आदमी था वो। Cover your eyes, cover your eyes, there's no sun. Where is your direction? Cover your eyes, ask yourself, where is my reflection? वो जिंदगी के सारे गम, तमाम दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा। कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज आदमी, भुला ही देगा ये जहां। मेरी अलग है दास्तां। वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल है जिसमें धड़कनें, वो बाजू जिनमें है सखत, वो होंठ जिन पे लफ्ज़ हैं। रहूंगा उनके दरमियां कि जब मैं बीत जाऊंगा। अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो।